What is your perception about these students, those who are Indian actually, but who have gone abroad for doing MBBS? First semester and all, it seems to be very difficult for them because the first semester is considered to be the time when they have to adapt to all those new changes. What should be an ideal mentorship आपके according इन बच्चों के लिए? Their focus should not be only clearing the MCI exam. It should be that they have to come back and practice here. कि मैंने बहुत सीखा है और जाके चलो अपने दोस्त को बताते हैं कि यार मैंने आज ये पढ़ा। तो उसके लिए करना क्या, किसी को नहीं बताना, अपने आप को बताना है। कैसे? हाय गाइस, आई एम डॉक्टर सिराज अहमद, योर फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी, और हम यहाँ बैठे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स दोज हु हैव गॉन अब्रॉड फॉर डूइंग MBBS. With me, I am having Dr. Jazeer, who is a dermatology faculty, Dr. Alekhya, who happens to be an orthopedic faculty, and with me, I am having the dashing Dr. Sandeep, who happens to be the surgery faculty. So I'll start with my very first question with Dr. Sandeep. Sandeep sir, you always visit to many countries for addressing our students, those who are doing MBBS from students. What is your perception about these students, those who are Indian actually, but who have gone abroad for doing MBBS? Right, so I had the opportunity of visiting various countries. तो मैं किर्गिस्तान गया हूँ, मैं रशिया गया हूँ, उज़्बेक, all these countries wherever I've gone, काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन होता है। तो कॉमन चीज़ें अगर आप ओवरऑल देखोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो एकेडमिक्स है, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर और लैंग्वेज इशू, स्ट्रीमलाइन नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है कि ये बता पाएं कि आगे कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द क्लिनिकल एक्सपोजर। उसका भी एक कॉमन रीजन है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, वो पेशेंट्स और स्टूडेंट्स ना, उनके बीच में वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। सेम हैपेंस विद द प्रोफेसर और टीचर एंड द स्टूडेंट, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहा। फोर्थ उनका जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज अबाउट हाउ टू अप्रोच आवर FMGE एग्जाम, क्योंकि वो इटसेल्फ इज सच अ डिफिकल्ट एग्जाम। और उनका जो कंट्री में जो व्हाटएवर एकेडमिक system is there, it is not strong enough for them to prepare for our country. तो ये उनके कॉमन है। बाकी इक्के दुक्के और छोटे मोटे हैं, खाना हो गया, रहना हो गया, दूर जाके अवे फ्रॉम फैमिली एंड ऑल दैट। और वो सर बहुत यंग बच्चा होता है, 16 साल 17 साल का जो बच्चा है, आपने उसको भेज दिया, तो इट्स लाइक सडनली इज बीन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमने ना कॉमनली इन बच्चों में सुने। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, नॉट ओनली विद रेस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स, बट ऑल्सो जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये हर चीज़ बच्चे को मल्टीपल लेवल पे अफेक्ट करती है। जजीर सर, यू हैव बीन वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर फॉर आवर स्टूडेंट्स इन अब्रॉड. According to you, what are the problems that student faces actually? So just like Dr. Sandeep has said it very correctly, irrespective of whichever country you go, like be it Russia, China, Georgia, Armenia, any country. So in all the countries, the students are saying the same pain points. Like first of all, they have to adapt to a new environment. The culture is entirely different. The food habits are different. And above that, they are stepping into medicine. So once they step into medicine, like when we interact with the first year students, what we understand is even picking up the accent of the faculty, how do they talk, whether they are able to catch up the English, which the accent should also match. So initial first semester and all, it seems to be very difficult for them because the first semester is considered to be the time when they have to adapt to all those new changes. And then the second thing is that the country wise, the curriculum also differs a lot. Like in some countries, I've noticed that in the CIS belt, like they have an integrated system of medicine. What is CIS belt? Like the Russia, Georgia, Armenia, all those countries. This is for our, okay. So they all follow integrated system of medicine. So in this integrated system, it is like in the first semester, they may learn about 2 organ systems. Like it can be the cardiovascular system or the CNS. But in that one organ system, anatomy, physio, biochem, embryology, histology. So 5 subjects are being done. So over a period of 5 semesters, they learn this entire organ system. So for that, they are very much confused. कि कौन सा books follow करना चाहिए? How do I, cope up with all those things? That is where a effective mentorship comes into place. That is where we can guide the students properly. Okay, ma'am, according to you, जहाँ तक सर ने बताया mentorship के बारे में, and I saw recently आप भी एक foreign country में गए हुए थे बच्चों का recently class लेने के लिए. What should be an ideal mentorship आपके according इन बच्चों के लिए? So I've recently happened to go to Russia, sir, this year. So as I've gone there, now probably the things have been changed because of introduction of this online teaching. Before it was, I think, not that good, but because of online teaching has come up so
rampant now these days, so ठीक है. they are able to follow the instructions from here, and they are able to learn and perceive new things. Right. So that is the change I've observed, but still there is a lot of scope for them. They need a lot of things to be told by us. That Right, means because they are coming back to India, it is not like they go settle there. They want to come back to India and they want to practice here, so they need that proper mentorship from here, from us, like whatever we get from the for whatever they get for the Indian students. So ma'am, as you were describing, if the ideal time to start the mentorship, like if you want to guide some student, what should be the time where we guys, or anybody who wants to be a mentor, or provide As a that faculty, हमारा रोल कब शुरू होना चाहिए? Yeah, I think it is right from the start, Right from from the first year, because first year subjects are very, very basic subjects. Every medical student, I mean everybody who wants to be a doctor should be thoroughly versed with anatomy, physiology and biochemistry. So I think from the very first year, they have to start, I mean they need that guidance of what books to read, how to read, and what to actually grasp from that particular textbook. So right from the first year they need that guidance, and it is better if they follow the system right from the first. I feel so. So the emphasis is like as early as possible. As early as possible. Yeah, yes. and then in a right track. I mean that the focus should not be only clearing the MCI exam. It should be that they have to come back and practice here. So they have to, they have to focus right from the first. It is not like only clearing the exam and then they feel that, okay, we are done. It is not like that. They have to crack the NEET PG as well. So they have to compete with the Indian medical graduates. That should be the main motto. MCI is just like a visa for us, the entry for us into the Indian system, right? So they have to compete with Indian medical graduates, means they have to build up that strength right from day one, and they have to put those extra efforts, comparing to our students, they have to put those extra efforts, and they have to learn everything what we teach them here. Very rightly said. Very true, ma'am. Ma'am, let's take this question ahead with Dr. Siraj. Sir, आपने ये सारा जो discussion है एक context में सुना है, तो हम तो प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हैं. एक प्रॉब्लम बोला, फिर एक और प्रॉब्लम, फिर एक और प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो सबके पास है. सोल्यूशन क्या है सर? सर देखिए, जब प्रॉब्लम आता है तभी सोल्यूशन आता है. और मैम मैं सच बताऊं, आपने बहुत ही राइटली पुट किया वर्ड्स को, कि ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ FMGE एग्जामिनेशन पास करना है. इंडिया में आने के बाद उनको नीट PG देना है, इंडिया में आने के बाद उनको प्रैक्टिस भी करना है, एंड दे हैव टू कम्पीट विद द प्रैक्टिशनर, समवन हु हैज डन देयर MBBS फ्रॉम एम्स और सम फ्रॉम MAMC और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन जो है, बच्चों को मेंटरशिप देने के लिए वी एज अ PW मेडेड फैकल्टी, हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो टीचिंग वाला प्लेटफॉर्म जो आप बता रहे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक तो ये कि रिकॉर्ड करके दे दिया, वो तो है, बट द थिंग इज दैट सिंस वी आर गिविंग देम लाइव बैचेस, हम उनको इसमें लाइव बैचेस में इनरोल कर सकते हैं. एंड थ्रू दिस लाइव बैचेस व्हाट दे कैन डू, दैट डेली का 2 घंटे का क्लास है, लेट देम हैव देयर ऑन शेड्यूल. इवनिंग में 2 घंटे का देयर विल बी अ क्लास, लाइव बैचेस होंगे. उस लाइव बैचेस में दे विल गेट एनरोल्ड, नो मैटर फ्रॉम वेयर एवर दे आर डूइंग MBBS, इट डजंट मैटर. आप आज के टाइम में सर फर्क ही नहीं पड़ रहा है. मैं देख रहा हूँ कि आप इंडिया से MBBS कर रहे हो किसी कॉलेज से, या आप किसी जॉर्जिया के किसी कॉलेज से कर रहे हो, मोर और लेस ऑनलाइन कंटेंट सर सबके लिए सेम है. यस और नो, सबके पास सेम एक्सेस है, सबके पास सेम एक्सेस है. तो अब ये बच्चा क्या कर रहा है आज के टाइम पे, दे आर गोइंग टू टेक दिस ऑनलाइन एक्सेस. हम एट PW मेडेड हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा इस MCI के सिलेबस को लेकर के, जो NMC द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है. हम क्लासेस लिए, हफ्ते में डेली बेस का क्लास है, 6 दिन क्लास होगा, 2 आवर्स क्लास चलेगा. उसके बाद से एवरी ऑल्टरनेट वीक जो एक इनका प्रॉब्लम होता है, क्लिनिकल ओरिएंटेशन नहीं रहता है, उसके लिए वी हैव सब्जेक्ट्स, आई मीन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, है ना, जब ये फर्स्ट ईयर में आया फिर सेकेंड ईयर में आएंगे, इनको क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू हो जाता है. हाउ टू डू अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाउ टू OBG के बेसिक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स, BP टेकिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी इसी लाइव क्लास में पढ़ा दी जाती हैं. नॉट ओनली दैट, मूविंग फॉरवर्ड इन सारे लेक्चर्स के साथ साथ इनको PDF भी उसका प्रोवाइड होता है, और साथ ही साथ इनको MCQ प्रैक्टिस के लिए भी अभी से शुरू किया जाता है. अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जब भी आप क्लास करते हो सर, क्लास करने के बाद लगता है ना कि यार मैंने आज बहुत सीख लिया, लेकिन किसको मैं बताऊं मैंने बहुत सीख लिया, बताना होता है ना. MCQs फर्स्ट ईयर में यही जोश होता है सर कि मैंने बहुत सीखा है, और जाके चलो अपने दोस्त को बताते हैं कि यार मैंने आज ये पढ़ा. तो उसके लिए करना क्या है, किसी को नहीं बताना, अपने आप को बताना है. कैसे सर, हर क्लास के बाद एक DPP है. अच्छा सर, ये प्रैक्टिस टेस्ट है उसी टॉपिक पे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने कुछ टॉपिक पढ़ाया, GI का कुछ एनाटॉमी पढ़ाया, या अगर मैंने पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़ाया, या कोई भी टॉपिक पढ़ाया, तो उसी पे एक 5 से 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन रहेगा, आपको इमीडिएटली देना है.
Yes. और उसके बाद से यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द एंटायर क्वेश्चन बैंक, जिसमें पिछले 5 से 7 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक्सेस है, उसका आपको डिस्कशन मिल जाएगा, उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, उसका वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर का अगर कभी मान लीजिए छूट भी गया लेक्चर, मान लीजिए आपका कभी किसी वजह से छूट गया, तो अब क्या है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही आपके पास। जो लाइव क्लास हुआ है उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं इन सारे प्रॉब्लम्स का सर, विद रेस्पेक्ट टू एकेडमिक्स। अब वहाँ की एनवायरनमेंट ठीक करनी है, उसके लिए थोड़ा कहीं और बात करना पड़ेगा ऊपर, है ना। भाई एनवायरनमेंट ठीक रखे गॉड, है ना। तो इसके लिए मैं बोलूँगा, देखिए हार्श एनवायरनमेंट तो है, बच्चे स्ट्रगल तो करते हैं, तो हम सब ने देखा है, वी आर वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर टू ऑल दिस कंट्रीज। तो वो तो बच्चों की एक ब्रेवरी है कि दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम जो ये स्ट्रगल करके आते हैं, और ये एग्जाम भी एक उनके लिए डिफिकल्ट पॉइंट होता है ना, उस चीज को आसान करने के लिए पीडब्ल्यू मेडेड इन सब बच्चों के लिए ये सारे कंटेंट लेकर आया। ग्रेट सर, मतलब वी हैव गॉट, मतलब कवर्ड इन एकेडमिकली वी हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इनपुट्स, और बच्चों को हम प्रोवाइड भी करवा पा रहे हैं। जस्ट टू कंक्लूड जो हमारा आज का सेशन है, जजीर सर, इफ अ स्टूडेंट कम्स टू यू एंड आस्क कि सर हाउ डू आई कंटिन्यू माई जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर to the end. अब एक और another question that comes out is, in few countries you have that 5 years का course, 6 years का, 7 years का, and then they have to come back. Could you just walk us through कि the number of years, how do they matter? मतलब is it getting uniformed? Do they really need the license of that particular country to practice, or is it enough for them to come back? Because it's a very hot question which has been going around. So several things have changed. Like just now, like what Siraj sir has explained, the solution that we have is going to be very much beneficial for the students, because we are not only making that journey, entire journey easy, because we are gonna split it. Like we are gonna make their each semester is easy. They're going to build better concepts, and this is an exam where almost less than 20% is the overall pass percentage. So once they come back with a better concept, matlab the results overall should again become better. Not only this, उनका जो MBBS के जो अपने प्रॉफ एग्जाम्स हैं वहाँ पे, उससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। बिल्कुल, because that is helping in each of the semester. Finally they are preparing early for the FMGE exam, like ma'am said, start early, you get a better result, and then they will have a stronger base to compete for NEET PG as well. But in this entire journey, the hot discussion is like what Sandeep sir has asked. Lot of things have changed since November 2021, where new NMC regulations have come. It has laid down several parameters. So out of these parameters, one of the things is that you should have a license from the whichever country you may graduate from. So you should be doing medicine only from those countries who is going to offer a program exclusively in English language. And there should be not a segregation between a local student and an international student. I mean, the course curriculum all should be the same. So these parameters, it's a gray zone, which it's not very much clear, because 2021 the regulations have come into place, which means the first batch under this regulation will graduate in 2027 only. So we have to wait and see, but I'm sure that whichever student goes abroad, obviously they won't be preferring to study in Russian language or any other language. So most of them would be going for a English medium education. Sir, there's another very important question that has been circulating. The question is about, one, the duration of the course, and second, about the licensing. We heard that it is mandatory or sort of mandatory to have a license from a student, whoever is doing MBBS from that particular country. So can you just put a bit of information on that? Yeah, this is the latest one under discussion, because in November 2021, the NMC has now released a new regulation that anybody who is going abroad should satisfy certain conditions, out of which there are multiple things, like the course duration should not be lesser than 4.5 years, which most of the countries... Plus 1 year internship. Yeah, plus 1 year internship, which most of the countries may satisfy. And the duration of the course is what we discussed. The language of instruction should be in English, because there were countries where bilingual education were offered. Right now only English medium is going to be done. The last one, which is under controversy, is regarding the registration, because students go abroad, but in which all countries are actually giving a registration to practice, because different country have different norms, because you may have to give a licensing exam sometimes, like in India right now. So you may get a registration right away along with the degree. So this is some area where which was never tested before. So that is a gray zone, I believe. But right now the students are just trying to collect maximum information, contacting with the embassy and all, and that is how they take an informed decision. Right. So I guess most of the students are going to this English speaking or English language of instruction.
courses. Colleges, yeah. And regarding registration, I think it will be only clear by 2027. That's the I first said batch, 27 because Oh, it is 21 too long. the students have taken admission. So obviously they graduate by 27. So 2027 would say. Okay. We'll have your answer then. Right, so guys, Too long. we still don't know what's exactly it is. So we'll also try to find out with you guys. Yes. But yeah, it does make sense that, you know, most of the students who are going to choose from here on should choose on those lines and those criteria. Yeah, but leaving those things aside, that is at the level of government. Yeah. All the students, those are already in India, or the students, those who are in third year, fourth year, or those who have already arrived in India. For them, we can easily say that to make their journey easier, we are coming not only live batches, but also in the recorded format, in whichsoever format suits them. They can go ahead and they can start their learning. Yes, sir. With that, thank you. See you all in our classes. Bye, guys. Bye. Bye.